My next question is for Ms. Sharma. Vanshika Joshi asks, will shifting completely to a plant-based diet negatively impact or affect our ecosystem balance? Shifting completely to a plant-based diet, whether that will negatively impact our ecosystem? Is that the question? Yes. So two things. Again, you have to see it's a systematic change, right? So when you shift, ecosystem damage can be seen in terms of your climate footprint, your carbon footprint, your water consumption, like how intensive is the water, the shift, how much water will that use up? So sure, it can't be like, I can't give you a formula directly, but what I can say is the meat and especially the beef industry, highly carbon intensive. It releases a lot of greenhouse gases, which is not good for the environment, especially contributing to the climate change. Secondly, if you see, if you, in the hypothetical scenario that we completely shift to plant-based, you have to see the kind of crops that we'll be growing. Agriculture is a land-intensive operation. So I'm not saying that a plant-based, industry is going to be a panacea for our environment. You can't make that claim. So you have to really think of the water impact especially and soil impact because agriculture is a land-intensive process. One very good sort of emphasis that has started coming out is on millets. Millets, your ragi ho gaya, bajra ho gaya. They're not water-thirsty crops. Sugarcane is a very water-thirsty crop. Rice is a very water-thirsty crop. So is wheat. So if you look at bajra and millets, I'm sure, Ms. Rita, I'm sure will like to add that bajra and millets and aapka ragi ho gaya, that's very good for your health as well. And because they're not water intensive or water thirsty crops, when you grow this, especially in areas like Rajasthan or Maharashtra, Vidarbha, there's no reason why we should be growing sugarcane. But it is grown. And, Vidarbha, aapka Latur ho gaya, consecutive years of drought you're facing. So yeah, we can't make a claim that, shifting to plant-based industry, all environment problem solved. No. We have to be very smart about how we plan the agricultural processes if we do shift. Again, going back to really choosing your crops and empowering the farmers to choose sustainable and smart agriculture and climate smart practices for agriculture. Can I just add to that, Chandarprabha? What I'm told, and you are a more better read person in this domain. लेकिन मेरे को जो हिंदुस्तान में हो सकता है ना हो ऐसा, but I'm told कि lot of the agriculture that happens around the world is actually for animal feeding, whether it's soy, which is for this, a lot of it is alfalfa, corn, जो human नहीं consumption, ऐसे varieties जो humans consume नहीं करते हैं. They actually, most of the land, a lot of the land, because again, you talked about carbon emissions through the dairy beef industry. लेकिन अगर आप देखें तो again the consumption of food जो एक animal को बनाने में लगता है, food and पानी, is huge. So मेरा जो समझना है, and again, I cannot possibly challenge your authority on this, but जो मेरा जितना समझ है, I actually feel otherwise. I feel कि the amount of land use will reduce if theoretically, if we were to all shift to a plant-based diet and there were no animals to be fed, तो वर्ल्ड वाइड जो है ज्यादातर जो जमीन है वो जाती है एनिमल्स की फीडिंग में, बिकॉज लोग ज्यादा एनिमल्स खाते हैं. तो एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए जो भी 30 टन खाना खाती है गाय इन व्हाटएवर पीरियड, तो उसको बनाने के लिए काफी जाता है. दैट इज व्हाट आई हैव रेड सो फार. सो आई डोंट नो, अगेन देयर आर डॉक्यूमेंट्रीज लाइक फोक्स ओवर नाइट्स which talk a lot more in detail about that and how the ecology will actually benefit. So I'm not so sure about the agriculture. Yeah, so not to comment on whether there will be a complete reduction or an increase, because there's so many causality factors that are involved when you make this change, right? But again, so it'll need a lot of econometric analysis and modeling to see which factor and which variable moves how. But how twisted is the thought that we grow plants to feed animals and then feed ourselves, which again should be the emphasis here, that if you do want to shift to a plant-based diet, what are the choices? How do you strategically shift in a way that is climate smart, water smart, land, efficient in a way? And also coming back to your point earlier where you said consume local.
because whenever we consume things like, avocado coming from California, or like almonds coming from California for that matter, there was an entire carbon footprint in the supply chain. There was water involved and everything. We consume local, and as a consumer, so I'm sure that, the individuals also watching, maybe you can do something as simple as see the products that you use in daily lives, consider shifting from rice to maybe millets and ragi. Simple things like just see the carbon and water footprint of each of your daily use product, and then try to make a shift which is not just good for the planet but good for your health too. Local and seasonal. I think Rita ji would agree to that. Seasonal is a yes, sure. Local, seasonal and freshly grown. ऐसा भी नहीं कि पुरानी चीजें आप राइटली सेड कि एवोकाडो आप वहां से मंगवा रहे हैं या कैलिफोर्निया से आपको बादाम मंगवाने पड़ रहे हैं, या एप्पल्स आप शिमला से मंगाते हैं, 3-4 महीने तक वो एप्पल का प्रोसेसिंग ही चल रहा होता है. वो एक होलसेलर से रिटेल के पास आता है, रिटेलर से ठेले वाले के पास आता है, ठेले वाले के पास से वो कब हमारे पास आता है वो यू नेवर नो. तो बेटर है अगर सीजनल वाटरमेलन है तो वाई टू कंज्यूम एप्पल्स. सीजनल फूड पर ज्यादा फोकस होना चाहिए. सिंपल सा एक फंडा होना चाहिए जो इस वक्त मार्केट में ढेर में दिख रहा है. हर तुमको लारी वाला के पास, ठेला वाला के पास दिख रहा है. भरपूर जो चीजें दिख रही हैं और सीजनल है, तुमको पता है कि इसमें कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसके ऊपर वैक्स का कोटिंग नहीं हो सकता, इसको स्टोरेज के लिए, इसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए कोई टॉक्सिक केमिकल्स यूज नहीं किए होंगे. तो वी शुड कंज्यूम दैट फूड ओनली, फ्रेशली ग्रोन और सीजनल, और जिसका शेल्फ लाइफ कम हो, ऐसा फूड हमें खाना चाहिए. बहुत ज्यादा टाइम तक उसको रखना है क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ बहुत है. फॉर एग्जाम्पल आमंड्स हैं, आप सालों साल, आपके कितने सारे लोगों के घरों में मैंने देखा है साल भर से बादाम पड़े हैं. बादाम में क्या खराब होता है? हर फूड आइटम का एक शेल्फ लाइफ है. या तो आपको उस शेल्फ लाइफ का कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. यू शुड नो ईच एंड एवरी फूड प्रोडक्ट्स शेल्फ लाइफ. अगर वो नहीं मालूम है तो एक थंब रूल हम बना लें कि फ्रेशली ग्रोन जो चीजें हैं, जो फ्रेशली अवेलेबल है मार्केट में, सिर्फ वो ही लेकर आएं, और थोड़े टाइम के लिए जो जिनको हमको स्टोर करके रखना पड़े उतना ही लेकर के आएं और उसे खाएं. जैसा कि हमारे पूर्वज किया करते थे. वो लोग थोड़ी कोई स्टोर कर करके बड़े बड़े फ्रिज, इतने बड़े फ्रिज किसी के घर में नहीं थे. सुबह का खाना बनाने के लिए रात को ला करके रखते थे, रात का खाना बनाने के लिए सुबह को ला के रखते थे. उतना हम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट सालों के लिए, महीनों के लिए स्टोर करके रखने की हैबिट हमें चेंज कर देनी चाहिए. इनफैक्ट वो पूरा सप्लाई चेन में चेंज होना चाहिए.